वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बना है। I suspect that the United States doesn't want to be pinned in the corner to choose between two friends, but if we have to choose between two friends, increasingly we're going to choose India. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के राजनीतिक अंत की शुरुआत हो चुकी है। In regards to India, Canada has shared the credible allegations that I talked about on Monday with India. We did that many weeks ago, and we are there to work constructively with India. We hope that they engage with us so that we can get to the bottom of this very serious matter. अब एक प्राइम मिनिस्टर जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी नहीं हुआ, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर अपने सदन पार्लियामेंट में बोल के हमारे देश के खिलाफ बोल रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट उसने बोला है। The only briefings that I've been able to receive from CSIS are what are called open information briefings or open source briefings, which is information that's available to the public doing an internet search, which I find frustrating. हमें ये गालियां बीप के पीछे छुपानी पड़ रही हैं। दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बुलाया था। ये दोनों नेता एक ही कैटेगरी के हैं। जब दोनों के बीच मुलाकात हुई तो कनाडा की जनता का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने ट्रूडो और ज़ेलेंस्की को गालियां देते हुए कहा कि इन दोनों को देश से धक्के मारकर निकाल देना चाहिए। On this matter, simply because Najjar was a terrorist and India is too important, our relationship is too important. While Justin Trudeau might want to make this a case of human rights, the fact of the matter is Najjar isn't a model one wants to use for human rights. Najjar may have been involved in the assassination of a rival Sikh leader just a year ago. At the same time, he has blood on his hands through multiple attacks. He entered Canada with a fraudulent passport. And the fact of the matter is, this is no Mother Teresa we're talking about. And frankly, many in the United States security community, and I believe actually many in the Canadian security community, probably understand that Justin Trudeau has gone too far. So this isn't a fight he wants to have. I suspect that the United States doesn't want to be pinned in the corner to choose between two friends. But if we have to choose between two friends, increasingly we're going to choose India on this matter, simply because Najjar was a terrorist, and India is too important, our relationship is too important. Justin Trudeau probably isn't long for the Canadian premiership, and then we can rebuild the relationship after he's gone. The only briefings that I've been able to receive from CSIS are what are called open information briefings or open source briefings, which is information that's available to the public doing an internet search, which I find frustrating. And so I can be transparent about that information that I've received. In terms of the specific incident in Surrey, I was contacted by the Prime Minister. He briefed me about what he was going to say in the Parliament, which he then went on and said. He offered to me a briefing from CSIS, which of course I said yes, I would like that. We arranged it. We got a briefing from the director, which was, as I say, open source information, and then that was it. I expressed my frustration in the meeting with the CSIS director about our inability to get more concrete information about this kind of thing, and I have articulated that to the federal government. I understand there may need to be reform around the act that governs CSIS in order for them to be able to share this information. If that's what's required, let's make it happen. Because the only way that we're going to make traction on this is by the federal government trusting the provincial government with information and being able to act on it in our local. जो मेरे ग्रैंडफादर का असैसिनेशन जिसने किया है सर, उसमें जगतार हवारा उसका राइट हैंड था, जिसको सर इन्होंने वहां पे पनाह दी, और वो खुद एक नशे की वॉर में, ड्रग की वॉर में और गैंगस्टर वॉर में वो मारा गया। अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और आरोप हमारे देश की एजेंसियों पे लगा दिया, और ये कहा गया वहां पे, एक मैं उसका नाम भी इस पार्लियामेंट में लेना नहीं चाहता, जो दूसरा एक टेररिस्ट पन्नू नाम है उसका, सर उसने ये ऐलान कर दिया भी कनाडा में हम हिंदुओं को नहीं रहने देंगे।
कितनी बड़ी दरार डालने की कोशिश की है। We are very proud of India because they don't do immature things. We have a very solid relationship with India. This is a sad episode. I hope this should end up amicably. We have a lot of hopes of the 70th UNGA. Most of the whole world is divided. And we believe, Bangladesh believes, that multilateralism is the way to go. We have so many challenges. It's a long run. Immediate challenge is also climate change. We have this price inflation across nations, energy insecurity. India, you see this G20 in India, as I said, it was more pointed, to the point, and that created real, an euphoria to come up with strategies to achieve the goals. And India became the leader of the global south. सबसे टॉप मोस्ट जो वांटेड गैंगस्टर और टेररिस्ट हैं 10 में से, आउट ऑफ 10 सर 8 आर इन कनाडा। उनको वहां पे पनाह दी हुई है, उनको वहां पे उनको रखा हुआ है, और सारा ड्रग हमारे पंजाब में और इंडिया में वो वहां से भेज रहे हैं। और जितने गुरुद्वारे हैं सर, जहां गुरु ग्रंथ साहब है, पंजाबियों ने जहां जो भी गुरु नानक देव जी को मानते हैं, नान लेवा लोगों ने जाना है, हर हफ्ते सर सैकड़ों गुरुद्वारे हैं जो पन्नू या निजर जैसे के कब्जे में हैं, और वहां से सर लाखों डॉलर पाउंड वो चढ़ावा जो चढ़ता है वो ट्रूडो की पार्टी को जाता है, इनके मंत्रियों को जाता है। इसलिए वो आधा % लोगों के हक में वो बयान दे रहा है। जहां तक सिखों की बात है सर, 99.5% हमारे लोग वहां पे बिजनेस करते हैं, लाखों एकड़ जमीन है, बिजनेस है सर, उनका कारोबार है बड़े से बड़े। मैं इस सदन में उनसे कहना चाहता हूं भाई, ट्रूडो को, उनकी पार्टी को जाके कहें, सारे हिंदुस्तानियों को मुंह तोड़ वहां पे जवाब देना चाहिए। हाँ, हमें बताएं, अगर आपका जहाज खराब हो गया, यहां पे 36 घंटे आप गर्मी में बैठे रहे, इसमें हमारी गलती है? आप वहां जाके पार्लियामेंट में ऐसे बयान दे रहे हो। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, हम सिख जहाज खराब हो गया था 2018 में, जब भी आए थे जहाज खराब हो गया था। बताओ सर, फिर इस सदन से सर रिक्वेस्ट कर देते हैं भी नया हम ले देते हैं। अब सर वो बातें नहीं रही। भारत सरकार के तरफ से, हमारे तरफ से, देश के तरफ से एक प्लेन उनको ले जाने के लिए भी ऑफर किया गया था, वो भी नहीं माने, तो गलती हमारी थोड़ी है सर। अब इस बात से जो इस बार ट्रूडो साहब ने की है, इससे इंटरनेशनल छवि कनाडा की कहीं रहेगी नहीं। Sir, I would like to have your small comment on one thing between the Canada and India issue, the recent statement by Prime Minister Trudeau. India has already sent so many, I think it is very sad. I don't know the detail of it, so I cannot make any comment. But we believe, we are very proud of India because they don't do immature things. We have a very solid relationship with India, and these are based on values and principles. So this is a sad episode. I hope this should end up amicably.